Assalamualaikum everyone. Thank you, Usmani sir. आप हमेशा engage करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और thank you Dr. Mahboob basically for presenting this book. It was literally my mind कि मैंने इसको आज सूरत पढ़ना है और आज ये opportunity मुझे मिली है और it is very relevant with the current scenario as well. आजकल ताज़ा जो हालात हैं recently ताज़ा elections हुए हैं और ये parliamentary history की किताब है जो कि basically gives a reflection of the history in terms of parliamentary politics. The book is quite technical, though it's written by a historian. That's why I believe कि मुझे थोड़ा सा इसको bilingual लेके चलना है order so it can be understood in a better manner. So coming to the book, the title of the book is Parliament of Pakistan: A History of Institution Building and Undemocratic Practices 71 to 77. So उन्होंने पहले ही बता दिया है किताब के टाइटल के अंदर कि ये पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की है लेकिन अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस. सो हमें अच्छी तरह से पता है कि ये टाइम पीरियड बिटवीन 71 to 77, that time period basically was about the constitutional formation. 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास आता है यहाँ पे ये वो टाइम पीरियड है या फिर ये वो टाइम पीरियड है कि जो दो अथॉरिटेरियन रिजीम्स के दरमियान है between Yahya Khan, Ayub Khan and Zia's time period. So it was so-called democratic, but the practices were not democratic at all. So this is the book all about. मैंने एक लाइन के अंदर आप लोगों को explain कर दिया है कि what is the main theme of the book. Coming to the formation of the book, the author starts from the history. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देते हैं और हमें अच्छी तरह से पता है कि जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है या डेमोक्रेसी है इज समथिंग नॉट इंडिजिनस टू द साउथ एशियन रीजन. इसके ट्रेसेस हमें साउथ एशिया में नहीं मिलते हैं. दिस आर कॉलोनियल लेगेसीज बेसिकली जो आज तक चल रही है. इवन इट इज नॉट इंडिजिनस टू द मुस्लिम वर्ल्ड. वी ऑलवेज प्रैक्टिस हमें या हम नॉमिनेशन की बात करते हैं या सक्सेशन की इस्लाम के अंदर, इलेक्शन की बात नहीं की है हमने इन द मुस्लिम वर्ल्ड. हाउएवर लेकिन अब हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई बिलीव हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि still we are doing much better than lots of Muslim countries. If you look at towards the Arab states, the Middle Eastern states, जहाँ पे monarchies है, which is again not part of the Islam. So still we are doing better. We need to be hopeful. However, जो भी elections में हुआ है 2024 में, उसके बाद भी हमें hopeful रहना चाहिए. That we are जिंदा कौम. अच्छा जी. Coming to the second part of the history, जिसमें वो colonial legacy की बात करते हैं, पार्लियामेंट की फॉर्मेशन की बात करते हैं कि किस तरह ये इवॉल्व हुई है और इसका किस तरह ताल्लुक बना है पाकिस्तान और साउथ एशियन रीजन के साथ. उसके बाद then he comes to the technical formation of the parliament, and that is quite difficult and technical because he uses lots of numbers in it, जिसमें आपकी सीट्स की बात करते हैं, जिसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उनकी बेसिकली क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी एज क्या है, जो पार्लियामेंटेरियन है किस तरह ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा. दैट इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ दैट पार्लियामेंट. Then he comes to the political tussle, which starts from 71 after fall of Dhaka and to 77 when Zia seizes the power. तो ये सारी की सारी political tussle है जो हमें बहुत I remember that I asked one of my teachers that what do you think कि कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया है कि जिसका इम्पैक्ट है आज तक के या he contributed positively towards the democracy. तो he said Bhutto साहब. ठीक है. And we all believe that Bhutto साहब is charismatic personality, but according to this book and his practices is totally different. अगर भुट्टो आज भी जिंदा है तो ये नहीं समझ आया मुझे इस किताब को पढ़ने के लिए कि वो क्यों जिंदा है आज भी भुट्टो, क्योंकि जो उनकी प्रैक्टिसेस थी that was highly undemocratic. Then he talks, the last chapter is the most interesting part, which talks about the analysis. When he relates the parliamentary politics which every point, जिसमें मीडिया आ गया है, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस आ गए, जिसमें मिलिट्री आ गई, और भी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको एनालिसिस, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक. इफ यू वांट टू basically read
this is the most important, in fact, according to my understanding and analysis, कि जिसके अंदर आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं और उसको आज की हालात हाजिरा के साथ भी आप उसको बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं. So, the first chapter talks about the institutional building in Pakistan, a conceptual framework in which we basically come up with the theory of philosophy, that is differentiation की बात यहाँ पे करते हैं कि जिसमें जो institute है वो basically it is something not related to the personal interest, rather it is an institute. वो इसलिए इंस्टीट्यूट है क्योंकि वो लोगों को इंगेज करता है, वो अपॉर्चुनिटीज देता है, वो चीज़ों को प्रोग्रेसिव मैनर में लेके चलता है और वो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान. सो दैट इज द थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन बाय फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू व्हिच बट द सिनेरियो व्हिच ही of research in this book is basically totally different. यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं किताब के अंदर और जो कि प्रूफ करती हैं कि बेसिकली जो भुट्टो का टाइम पीरियड था दैट वाज हाईली अनडेमोक्रेटिक. इसमें अगर हम देखते हैं, let me explain the chapter number 2 first and then come to the Bhutto time period. Then he gives a brief parliament, a brief survey of the parliament of Pakistan, जिसमें वो 48 से लेके बताते हैं 54 तक, 54 से लेके बताते हैं 1958 तक कि उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज थी, जो कि आर्मी स्टार्स असेंबलीज थी, वो किस तरह काम कर रही थी और उनको कैसे काम नहीं करने दिया. एंड इंटरेस्टिंगली एक जगह पे ये बताते हैं कि बेसिकली द 1956 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 60% ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से 1935 के एक्ट से लिया है, 30% इंडियन एंड 10% वर नॉर्मल. अब कोई पूछे भला 9 साल के बाद आपने अगर कुछ किया तो सिर्फ 10% आपकी कंट्रीब्यूशन थी. So what you were doing that time period for 9 years, ठीक है, जिसमें हमारे पास वो लीडरशिप थी, वो ब्यूरोक्रेट्स थे कि जो कि कंट्रीब्यूट, जो कि बेसिकली उस हालात से गुजर के आए थे. They were the team who were leading the country at that time. और उसके बावजूद that 60% of the constitution was drawn from the British perspective, 30 from the Indian, and 10% only was the novel. That was the 1956 constitution. However, things moved ahead. तो उसके बाद अयूब साहब का era आता है, and then comes the presidential form of government. Something which really I have observed, the point chaos was the most sustainable element throughout the history, whether it's authoritarian regime or democracy. हम आज लड़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन क्या हम ये सवाल कर सकते हैं कि जो हम इनसे पहले सिविलियन हुकूमतें आई हैं, क्या उन्होंने डिलीवर किया अपने दिमाग? Have they satisfied us? क्या हमें यही चाहिए था इन लोगों से? So this is the basic जो इसमें आप देखेंगे इस किताब के अंदर कि that he talks about a kind of uncertainty and chaos throughout the book. So what I have concluded according to my analysis कि हम हमेशा कहते हैं authoritarian regime और military authoritarian regime, but civilian authoritarian regime भी रहा है. So this is basically जो common चीज़ है वो authoritarian perspective है या attitude है towards the masses. So ये जो सबसे important aspect है इसके अंदर, it's not about civilian and military. It's about the authoritarian mindset. It's about the elite capture, which is basically against the democratic trends. Then he come about the second assembly under Ayub Khan, the formation. In third chapter, he talks about the formation, complexity, and differentiation of parliaments. So here, basically, this is the most technical part when he talks about the formation, कि कैसे ये बनी है, professional background of the parliamentarians, कितने लोग कहाँ से किस profession से आ रहे हैं. Around 60% were from the agriculture side, 20% were lawyers, somehow some few percent from the executives and doctors, engineers. This is how the formation was. अब देखिए अगर आपका पार्लियामेंट में सारे के सारे एग्रीकल्चर साइड से आ रहे हैं तो
तो वो क्या आपके लैंड रिफॉर्म्स को सपोर्ट करेंगे? How is that possible that they will support the land reforms? Obviously जब land reforms का time period आया, भुट्टो के time period के अंदर, तो उसमें फिर वो जो थे abrupt decisions थे, the parliament was not consulted because हर जो stakeholders हैं ना, the representation, अब चलिए ठीक है हम बात इस तरह कर लेते हैं कि अगर ये agriculturalists ना होते तो कौन होते? These were the landowners who had the capacity to come into the election and do the representation at the parliament. अब इनके होते हुए तो हम इस तरह की जो है ना जिसके लिए न्यूट्रल या बैलेंस पॉलिसी मेकिंग या मोशन मूव नहीं की जा सकती है. So that was one of the aspect when it comes to the parliament, professional backgrounds of the parliamentarian. The most aspect which he mentions that he says कि basically the good thing was lawyers were there which supported the environment of the parliament at that time. But again, इसमें भुट्टो साहब के जो पसंदीदा लोग थे या उनके जो ऑर्बिट में फॉल करते थे, वो उनमें अगर नहीं होते थे तो उनकी बात भी नहीं मानी जाती थी. Then he talks about the gender. Women representation was very low at that time as well. Educational qualification, as I have mentioned, age group of the people, and then Senate formation as well. However, sometimes I believe at the structural level or at the paper level, we have always done 100% in terms of democracy and the parliament. लेकिन जब बात आती है फंक्शन की, ये बात आती है डिलीवर करने की, वहाँ पे इश्यूज आते हैं कि जिसके अंदर जो मेरे एनालिसिस के अंदर जो अकॉर्डिंग टू दिस बुक कि सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी कल्ट आ जाती है, देन सेंट्रलाइज्ड पावर अथॉरिटीज आ जाती है, नेपोटिज्म आ जाता है वहाँ पे, and the lust to sustain power. So it's all about the elite capture कि जिनके पास पावर है, पावर वहीं पे सस्टेन करती है, वो आगे उसको नीचे नहीं आने दी जाती. Then he, as I said, it's quite technical. He talks about the working relationship between the houses, two houses, the parliament and the senate. Though जो senate था, उसकी ज़्यादा ceremonial powers थी या symbolic power थी, it was not in that true sense. भुट्टो साहब ने जो है उसको basically according to the constitution formation, senate की basically in order to check and balance the follow के लिए senate formation होती है to support the parliamentary action. Otherwise, all the powers has been vested in the parliamentary legislation. लेकिन उसको कभी इस तरह की जिसे कहते हैं आप independent या फिर dominating authority या dominating position नहीं ली गई है. हमेशा parliament को suppress किया गया है by the executives, by the establishment, the army, and by the prime minister himself as well. Sometimes I believe पाकिस्तान में जो chaos इस वक्त है, we cannot even sometimes हम कहते हैं कि कोई एक खास इदारा है जो कि responsible है इस सब कुछ के लिए, लेकिन अगर हिस्ट्री को देखा जाए किसी एक खास इदारे को या किसी एक इदारे को responsible नहीं ठहराया जा सकता. What was the role of politicians? इदारे बाकी judiciary इन सब का रोल है इसके अंदर. हाँ किसी का कम किसी का ज़्यादा है, लेकिन everyone has contributed towards the decline of the parliamentary politics in Pakistan. In Chapter 4, he talks about the sovereignty of the parliament as a constituent assembly. The interim constitution 1972. Interestingly, he mentions that Bhutto was not willing to leave his position as the civil martial law administrator at that time. वो interested ही नहीं थे. He was not in support. हम कहते हैं कि constitution Bhutto लाया है 1973 में, और इसी को हम लोग कैश कराते हैं People's Party में. But he was not in support of that action at that time. कि वो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि the power, the authority which was given, inherited from Yahya Khan at that time, that was unprecedented. और जितने भी reforms हैं आए हैं और जितने भी major changes आए हैं, वो between 71 to 73 आए हैं. Later तो चीजें पार्लियामेंट में ले जानी पड़नी थी,
लेकिन उससे पहले का जो टाइम पीरियड था, एट दैट टाइम भुट्टो वाज, आई मीन कोई उनकी जैसा था ही नहीं पावरफुल। जितनी भी चीजें आई हैं, इसमें एक चैप्टर है जिसमें सोशल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, एंड ही मेंशन्ड नंबर ऑफ रिफॉर्म्स ये केम थ्रू इन दैट टाइम थ्रू ऑर्डिनेंसेस, कि जिसमें उन्होंने चीजों को अपने अकॉर्डिंगली रिफॉर्म किया है. So that was the best thing. Authority is not basically if it's given to Musharraf or Zia or anyone. It's even when whoever comes on that seat, basically he misuses that authority. That's the point which, या फिर हम लोग शायद as a nation we are not trained yet to be democratic, or we do not have civilized background to understand what democracy is, or it is not indigenous concept to our nation, or we are not ready to accept to be parliamentarian or democratic in that in true sense. So there are so many questions coming into my mind after reading, because हमने हमेशा यही सुना है that we have three leaders. One is charismatic leaders, one Jinnah, the other is Bhutto, and now Khalsa. Okay? So this is what we have perceived, and we have basically gauged through our political perspectives that the leadership will, these three have charismatic leadership, which basically have influence on the people of Pakistan. Those people maybe do not agree about Khan Sahab yet. आने वाले टाइम में चीजें और ऑब्वियस होती जाएंगी, लेकिन हम इन चीजों को देखते हैं among the young people especially. Chapter 5 talks about the parliamentary efficiency and on national issues. इसमें issues between 73 to 77 has been discussed. जिसमें सबसे पहले इमरजेंसी का इशू था, जिसको भुट्टो साहब नहीं हटाना चाहते थे, और भुट्टो साहब ने उसको तब हटाया कि जब उनको यकीन हो गया था कि एज अ प्राइम मिनिस्टर उनके पास उससे ज़्यादा पावर्स आ गई हैं. Then he moved to the 1973 constitution. The second was the Qadiani issue. According to the book, उनके बहुत से ऐसे लोग थे जो कि बहुत अहम ओहदों पे फाइज थे उस वक्त, जो कि कादियानी थे, and he didn't want them, उनको नाराज नहीं करना चाहते थे. That's why the issue was sent to the parliament. ये वाहिद इशू है जो पार्लियामेंट में डिबेट हुआ था, और भी है, लेकिन मोस्टली जो मेजर इश्यूज में से है, एक ये इशू पार्लियामेंट में डिबेट हुआ था. Every issue was not given space in the parliament, या फिर उसको जो अचेयरमैन मोशन को ही रोक दिया जाता था कि बेसिकली ये हो ही नहीं सकती, या फिर ये फेडरल कैपेसिटी में है ही नहीं, ये प्रोविंशियल कैपेसिटी में आप ले जाइए. बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं, बहुत से लोग इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन बलूचिस्तान का जो इसमें इशू आता है, पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें इशू आता है, इसमें मीडिया का इशू आता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, फॉरेन पॉलिसी का इशू आता है कि जो चीज़ वो चाहते थे उसको पार्लियामेंट में लाते थे, या वो चीज़ जिसका बर्डन शायद वो लेना नहीं चाहते थे तो वो पार्लियामेंट में दे दी जाती थी कि आप इस पर डिसाइड किया जाए. अदरवाइज पार्लियामेंट वाज नॉट अ फ्री फॉरम टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. सो आज क्या है, आज भी तो यही कुछ हो रहा है. It means that we are stagnant, we are not evolving. Democracy is not evolving in Pakistan. The question comes, what's next, what we need exactly now. क्या हम दोबारा इसी प्रोसेस में पड़ेंगे, ये सोचेंगे कि क्या किस किस्म का पॉलिटिकल सेटअप होना चाहिए जिसकी वजह से एक प्रोग्रेसिव कंट्री की तरफ आए. व्हाट इज द क्वेश्चन. और या फिर हम इसी निजाम को चलाने की कोशिश करें जो कि इतने सालों से नहीं चल रहा है. Then he discusses the foreign policy issues in which वो बलूचिस्तान कश्मीर की बात होती है, और अफगान रेफ्यूजीज की बात होती है, बजट सेशंस की बात भी बताते हैं इसके अंदर. फिर इसमें रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश की बात आती है, जिसमें इवेंचुअली आफ्टर पार्लियामेंट दे सीक basically legitimation from the court to recognize Bangladesh at that time. Though इसमें सिमला अकॉर्ड की बात आती है, and the number of prisoners basically. और interestingly one of the facts which I came across, maybe मुझे भी नहीं पता था at that time, कि Bangladesh recognition was asked, India wanted that recognition, और उन्होंने prisoners उसी बात पे वापस करने की बात की थी कि हम मुझे 93,000 prisoners at that time 1971 ढाका
की वॉर के अंदर कि पाकिस्तानी जो वहाँ पे रह गए तो उनको भी वापसी के लिए सो बेसिकली उन्होंने कहा था कि आप पहले बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करें, सो दैट वाज वन ऑफ द बेसिकली सपोर्ट। तो एक किस्म का अब इसको हम कियोस कहें या स्मूथ या शायद पॉलिटिक्स सियासत होती ही ऐसी है कि जिसके अंदर यू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट रादर यू प्रोवाइड सॉल्यूशन। So solution, there was never solution. It's just managing the conflict, how it's basically was moving. So at the end of the book, पढ़ने के बाद मुझे solution तो ही नजर आया. I couldn't identify कि obviously that is written with a historical perspective, but there was no solution to these problems, especially in the backdrop of the scenario of the 2024 elections. Exit from the Commonwealth, similar agreement, socio-economic reform, and the parliament and the Balochistan government. और जो atrocities which has been conducted regarding the Baloch ethnic group and Balochistan, उनकी government को, and interestingly, the facts which were given in the parliament or were coming in the newspaper were denied in the parliament. जब वहाँ पे बात होती थी कि इतने लोगों को वो atrocities हुई हैं, इतने लोगों ने suffer किया, it was totally denied in the parliament. Even the newspaper reporting were denied in the parliament. So these were things which shows that the parliament was something working under the under Bhutto's authoritarian civilian जिसे कहते हैं leadership. So that's something. दो हम अब इसमें बहुत सी चीजें हैं. Somewhere हम ये कह सकते हैं कि भुट्टो basically was a leader which came through Ayub Khan, through the authoritarian regime himself. He was trained by his masters. So his mindset was not that different. Though he made the constitution, though he supported the parliamentary politics, but it was highly controlled. So this is how still he is charismatic, and हम उसको यही कहते हैं कि भुट्टो आज भी जिंदा है. The last chapter, which I felt the most interesting, talks about the establishing autonomy, relation of the parliament with other institutions. Executive's influence of the parliament, इसमें bureaucracy की इन्होंने बात की है, how bureaucracy was influential. दो इसमें ये कहा जाता है कि भुट्टो साहब ने तकरीबन 1800 कुछ bureaucrats को आते ही हटा दिया था, और उसके बाद जो bureaucrats नीचे से ऊपर लाए गए थे, reshuffling थी. इसी तरह आर्मी establishment के आर्मी में भी उन्होंने जो लोग थे उस वक्त उनको हटा दिया गया था. पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि जनरल गुल उनका नाम था, उसके साथ भी उनके हालात जो थे वो हमवार नहीं थे. एंड दिस इज समथिंग. तो फिर जब आपका ब्यूरोक्रेसी के साथ प्रॉब्लम है, जब आपका आर्मी के साथ प्रॉब्लम है, जब आपका पार्लियामेंटेरियन के साथ प्रॉब्लम है, उनकी बात नहीं सुन रहे, वो मोशंस नहीं चला रहे, जब आपका प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, आप उनको बैन कर रहे हैं, जब आप जो अपनी सिक्योरिटी फोर्स बना रहे हैं which is parallel to the army for your interest, individual interest, ठीक है, जब आप हर चीज को फॉरेन पॉलिसी अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, तो आप बताएं फिर जियान ये नहीं करना था तो क्या करना. I mean the route was so chaotic and uncertain and supported. आपकी किसी इंस्टीट्यूट के साथ भुट्टो साहब की अलाइनमेंट नहीं आ रही है यहाँ पे. And how it's really sad that how the history is distorted. किस तरह हम ये बात कहते हैं कि this is the democratic trends जो हमारे पास जो कन्वे किया जाता है, that's totally against the history and unrealistic, highly unrealistic. अच्छा जी. फिर ये बात करते हैं the cabinet and the parliament. किस तरह cabinet के relationship था parliament के साथ, army versus the parliament, how it was controlled. Even the army gradually after 1971 the morale of the army was quite down, जिसमें स्पेस मिली है भुट्टो साहब को कि वो अपने आप को बेसिकली अपनी अथॉरिटेरियन पर्सपेक्टिव को राइज करें. उसके बाद gradually from 71 to 77 the army gained its morale. इसको भी टाइम पीरियड लगा है, लेकिन they were had इनकी भी दरमियान बहुत से ऐसे cleavages थे, ऐसे issues थे जो basically they were not in support of Bhutto's tenures. Creation of the Federal Security Force, which is the most important aspect, जिसको उन्होंने अपनी atrocities या controlling authorities या unjust या इस तरह की
एक्शन के लिए, कामों के लिए इस्तेमाल किया फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को. Civil bureaucrats, obstacles in the way of the parliament. ब्यूरोक्रेसी के साथ भी उन्होंने कुछ चीदा लोग थे, आज भी है, it's the same. आज भी हमारे पास फवाद हसन फवाद, yes, वो हैं. उस जमाने में वकार साहब थे at that time of period. Civil bureaucratic obstacle, अच्छा, reduction in the power of judiciary को control किया गया है. यहाँ भी ऐसे आप उन्होंने इक़दामात लिए हैं कि जिसके अंदर जुडिशरी की पावर्स को कर्टेल किया गया. सो व्हाट लेफ्ट? फिर पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पार्लियामेंट, कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के ये बाकायदा इंडक्शन हुई है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन या जो उसको किसी वक्त भी खत्म किया जा सकता है या रोका जाता है या पॉलिटिकल पार्टीज को सिरे से illegal कर दिया जाता है. So that's the political. Still we are facing the same issues here in 2024 as well. The ruling party, Pakistan People's Party, it dominated the parliament at that time. Though it was again there were some people who were supported by the by Bhutto at that time. Media at the parliament, media was highly controlled. हमने हमेशा ये बात सुनी है कि जी ज़िया साहब ने कंट्रोल किया मीडिया को. पीटीवी में लोग खड़े होते थे कि जो कि न्यूज़ निकलने से पहले उसको कंट्रोल करते थे, लेकिन if Bhutto was doing the same, so what is the difference comes here? There are so many things which came to my mind after reading this book that we need a really true analysis of what democracy means to Pakistan. How democracy can be run. Do we civilians can really do something for Pakistan? क्या ये कुछ वाकई में contribute कर सकते हैं in uplifting the people of Pakistan? So that's the main question which came to my mind after reading. Relation with the parliamentarian and one another, training with the parliamentarians. So then comes the conclusions, and I think I have covered all the topics. Rest we can make it in the question answer session. So thank you very much. It was a wonderful day. Very nice day. Okay, question answer session, please. इसलिए मैं ऑथर्स मौजूद हूँ तो फिर एक डबल जेपर्डी हो जाती है. So I need your support, Mahboob sir. मेरा सवाल ये है कि किसी एक नशिस्त में बैठे हुए मैंने सुना, मेरे में नहीं था, ये जो भुट्टो साहब के दौर में एफएसएफ में, तो उस पे आपने अभी रिव्यू में जो जुमला बोला ये था कि वो सिर्फ मंफी मकासद के तहत. मेरा सवाल ये है कि जिस नशिस्त का मैं जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पे बात हो रही थी, जहाँ कुछ सीनियर लोग बैठे हुए थे जिन्होंने वो दौर देखा, तो उन्होंने कहा कि भुट्टो अपने तई एक बहुत बड़े मसले का हल था, और वो हल ये था कि अब के सारे हुक्मरान वो the institution which is वो जैसे हैरी पॉटर में होता है ना, he who must not be named, तो वो हम सब जानते हैं एलिफेंट इन द रूम, तो उसी पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए. तो कोई भी जो हुक्मरान है तो वो भी कहीं पर नहीं मार सकता, क्योंकि अगर उनके मिलिट्री सेक्रेटरी भी हों तो वो अपनी इंस्ट्रक्शंस किसी और इदारे से ले लें. तो ये एक तरह का एक जेन्युइन एक मखमसा है. और सुना ये है कि इंडिया में या कुछ और मुल्कों के अंदर, जैसे अगर अमेरिका की मिसाल दें, आई डोंट वांट टू, लेकिन अभी ज़हन में फौरी तौर पे वो आ रही है कि जैसे वहाँ प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी जो है वो सीक्रेट सर्विस करती है. तो नॉट के भुट्टो साहब का कोई खमीर फर्क था, यकीनन ये कॉलोनियल दौर में इनके खानदान की जो फॉर्चून्स थी वो बनी, और वही कॉलोनियल माइंडसेट, जागीरदाराना माइंडसेट, फौजी कमले में तैयारी, जैसे आपने भी जिक्र किया. तो इस हवाले से किताब में हमें क्या गाइडेंस मिलती है? एफएसएफ का ये पर्सपेक्टिव भी पेश नज़र था भुट्टो साहब का, या मतलब जाहिर बात है जो एक तो वो बात हो जाती है. अच्छा, इसमें एक तो ये कि 1971 के बाद मुझे इमरान भट्ट which gave space to Bhutto Sahab to do whatever he wants. पहली बात ऐसा का जो सिक्योरिटी फोर्स उन्होंने बनाई है, basically it was not liked or supported by the army at that time according to this book, because उन्हें ये लगा कि एक पैरेलल
झूठ उनके साथ बन रहा है। है खुद पैरेलल बना के चला रहे। तो ये इसके तो इस वजह से आर्मी never supported that security force perspective. Lastly, that he used that अपनी जो उनकी इंडिविजुअल या पर्सनल privileges या animosity थी उसके लिए उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, which gave it a different dimension. As मैं कहती हूँ हमेशा एनालिसिस करते हुए तीन चार ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पॉइंट होता है, मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं जो बन के एक चीज हमारे सामने आती है. So that is basically what according to this book. तो मैं सर की स्टूडेंट भी हूँ और दूसरा ये कि आपने इस बुक का रिव्यू किया है और आपसे भी और सर से भी मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस किताब के अंदर जो कंपैरिजन आप कर रही हैं ड्रॉ कर रही हैं भुट्टो टाइम पीरियड को लेकर और ज़ियाउल हक टाइम पीरियड को लेकर, मतलब मुझे ऐसे लगा उसी पर्सपेक्टिव में पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हम ये भी कहते हैं कि ज़ियाउल हक के टाइम में आके रिलीजन का एक जो यूज़ था वो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर हम लोग भुट्टो टाइम पीरियड में देखें तो जो रिलीजन का यूज़ भुट्टो साहब ने भी किया, क्या हम लोग उसको नहीं क्रिटिक उस तरह से करते? मैं ये समझती हूँ कि उसको रीराइट करने की या रीरीड करने की हमें भुट्टो पीरियड को ज़रूरत है. इसमें मैं एक आपसे छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूँगी कि मैं आजकल इमरोज़ न्यूज़पेपर पर काम कर रही हूँ अपने थीसिस को लेकर, तो उसमें हमें पता है कि 70s ज़ियाउल हक से पहले भुट्टो साहब ने भी नाइट क्लब्स पर जो था वो बैन कर दिया और जब आफ्टरवर्ड्स नुसरत भुट्टो साहिबा की एक जो है वो मैंने क्लिप भी बल्कि उसको कर लिया है सेव के वो सेव रहे. नुसरत भुट्टो साहिबा का बयान था कि हमारा ये कोई एजेंडा नहीं है बाद में आफ्टरवर्ड्स मार्शल लॉ के बाद के हम लोग बैन करेंगे सारी चीज़ें. तो मैं ये समझ रही थी हमें रीरीड करने की भी ज़रूरत है भुट्टो टाइम पीरियड को इस हवाले से भी कि रिलीजन का यूज़ दोनों जगह पर हुआ है, लेकिन हम लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज जो है वो करते हैं ज़ियाउल हक पीरियड में कि उससे बहुत ज़्यादा यूज़ किया. तो इस पर मैं आपकी फिर सर की भी राय लेंगी. नहीं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. हम भुट्टो के टाइम पीरियड को ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल या डेमोक्रेसी से रिलेट करते हैं और जो ज़िया के टाइम पीरियड को इस्लामाइजेशन से करते हैं. तो वहाँ पे जो पॉलिसी की मेजर चेंजेस उन्होंने लॉज में किए थे, हदूद ऑर्डिनेंस में ब्लास्फेमी लॉज लेके आए हैं, बहुत से ऐसे लॉज लेके आए जो रिलीजियस के सपोर्ट दो. आई आस्क्ड लॉ स्टूडेंट ने उनसे कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कानून शहादत एंड लॉ ऑफ एविडेंस. मुझे को खास डिफरेंस नहीं, क्लॉज और आर्टिकल को बस उन्होंने चेंज कर दिया और कहीं पे कुछ उन्होंने इस्लामिक कोटेशन उसमें डाल दी है. देयर इज नो ह्यूज डिफरेंस. तो वहाँ पे थोड़ा सा जो वो था इस्लामाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि दुपट्टा लेना है, लॉट्स ऑफ इस तरह की चीज़ों को जो कि या लोग से जिहाद का कॉन्सेप्ट वहाँ आता है 1979 का, इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है ईरान में 1917. There's so many things which supported the religious perspective at that time. Bhutto's time period was more basically the initial time period वो 1971 सुकूत ढाका के बाद उसका इन्फ्लुएंस रहा है और उसके बाद 1973 के बाद जब पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स शुरू होती है और हाउ टू सप्रेस द अपोजिशन, ठीक है, और ये अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करना और हाउ टू ब्रिंग रिफॉर्म्स. बेतहाशा से रिफॉर्म्स आए, लैंड रिफॉर्म्स आए हैं, नेशनलाइजेशन के आए हैं, कादियानी का इसमें आया है, there's so much एग्रीमेंट इसके अंदर, so many things which he has done regarding. तो वहाँ पे थोड़ा सा और सिनेरियो डिफरेंट, यू कैन नॉट रिलेट इट. और मैंने अभी अकॉर्डिंग टू माय ओन एनालिसिस हमेशा इसमें पर्सनालिटी कल्ट बहुत होता है. अगर हम मुशर्रफ को देखें वहाँ इस्लाम का कोई नाम नहीं है. मॉडर्न एनलाइटमेंट का बात करते हैं, मॉडर्निटी की बात करते हैं, चैनल्स आ गए हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर कि बेसिकली इट्स नॉट अबाउट पार्लियामेंट्स, डेमोक्रेसी और सिस्टम, इट्स अबाउट पर्सनालिटीज हु आर कमिंग विद अथॉरिटी. कि जो पर्सनालिटी आती है वो अपना माइंडसेट लेके आती है, उसी को इन्फ्लुएंस करती है, वो समझती है कि यही चीज होनी चाहिए. सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीस पीपल. थैंक यू. Thank you, madam. That talk was really insightful. Shashi Tharoor famously said that if we don't know where we are coming from, how can we appreciate where are we going to? Ma'am, in Pakistan, the role of political parties in nurturing the political environment was not convincing. For example, in April 1953, Governor General Ghulam Muhammad dismissed the cabinet and ministry of Nizamuddin, and the Muslim League itself didn't object the role of the Governor General, and the newly elected cabinets
members were the formally elected. What are the strategies to make our so-called dynastic political parties truly democratic? Thank you. Political parties की evolution as जिसका होनी चाहिए वो कभी नहीं हुई है. It's more about power, money, landlords जो खुद ही अपने एरिया में strengthened थे या किसी capacity के हामिल थे वही उन्होंने आगे political parties और politics में गए. It was never a true representation of the people in any political parties. That's why it's dynastic, more dynastic politics. और उसी सियासत की भी जा रही और फिर हमेशा यही लोग आ रहे हैं. It's more about lobbying. ये बात मैंने पहले भी इस सेंस में कही है कि ये elites capture है कि जिनके पास ये अथॉरिटी है या ये लॉबिंग करने की कैपेसिटी है वही जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी उसी में आ रहे हैं. अब ट्रू रिप्रेजेंटेशन पहली बात पब्लिक हमारी अवेयर नहीं है, इनडिफरेंट है. उनको पता है कि जो भी आएगा होना यही है जो इस वक्त हो रहा है. नथिंग विल मेक एनी डिफरेंस. फिर तीसरी बात ये है कि दे आर केप्ट सप्रेस्ड, अनएजुकेटेड, इलिटरेसी, अवेयरनेस ही नहीं है कि वो लोग चाहते क्या हैं. उनको यही नहीं पता डायरेक्शन. कभी से आप सिंध की आवाम को देख लीजिए, उनको भुट्टो से कभी निकलने ही नहीं दिया है जो इंटीरियर सिंध है. सो ये सारी की सारी. और लास्टली मैं कहूँगी ब्रेन ड्रेन. पाकिस्तान में जितने भी स्किलफुल लोग हैं वो बाहर की तरफ देखते हैं. आज हम सब मैं कहती हूँ हमें किसी को अपॉर्चुनिटी मिले हम जरूर बाहर जाएंगे. सो दिस इज समथिंग. जब लोग रहे नहीं यहाँ पे सीवियर ब्रेन ड्रेन है तो आप खुद सोचिए कि वो चेंज कहाँ से आएगा जब लोग ही निकल गए हैं. और समटाइम्स आई बिलीव इट इज अ वेस्टर्न एजेंडा कि आपने इमिग्रेशन दी के सारे स्किल्ड लोगों को, आम लोगों को नहीं लेके जाते, हमारे स्किल्ड लोगों को ले गए वहाँ पे. तो यहाँ पे क्या रह गया है? सो फ्रॉम कहाँ से चेंज आएगा? तो वही मौनसी सियासत ही रह गई ना जो इसी तरह कंटिन्यू कर रही है. Thank you so much.